I was always told कि you're not dating a star, you're not dating a producer. So what makes you think that you'll make it here big? आपके कोई मन का हाल भी नहीं पूछता है उन दिनों में, सिर्फ आपको गलत ठहराया जाता है. बहुत ऐसे दिन थे when I was very lonely. My father didn't speak to me for a year. मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही हूँ. मुझे नहीं पता कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है और वहाँ पे पॉलिटिक्स, झगड़े ये सब चलते हैं. सो मैंने चुप चुप के आई फिल्ड इन द फॉर्म. आई कांट टॉक टू माई मॉम डैड, आई कांट टॉक टू माई सिस्टर बिकॉज वो दहशत थी इतनी ज़्यादा घर में. एंड देन माई फादर सेड नहीं नहीं नहीं, हमारे घर की लड़कियां तो ये कर ही नहीं सकती हैं क्योंकि वहाँ पे तो बिकिनी पहनना है, वो तो इम्पॉसिबल है. आई हैड नो टाइम एंड पेशेंस नहीं था मेरे अंदर. आई कुड नॉट वेट टू कम टू बॉम्बे. Hi everyone, this is Soundarya Sharma and I am an actor. Here you watching me for my journey and on my journey entirely, not just through the prism of Big Boss, but a dentist, becoming an actor and going through all those ups and downs only on Josh Talks. I had the environment of a very conservative Brahmin family because I am a Brahmin, where getting into films was a very dream of very native Pluto kind of things. So for me, it was surreal and unreal kind of a thing to dream on. And I think that's where, when you born and raised in a very kind of strict family, they make the biggest liars and rebellious kids. So probably I am not a very patent liar, but a rebellious I became. So my childhood was very interesting for that matter. So my education happened in Delhi. My graduation happened in Delhi. So that is my birthplace. And now I moved to Bombay, which is my karma bhumi now. So kyunki ghar mein everybody was only into education, even in my wildest dreams I could have not imagined getting into films. And unfortunately I was good in studies, so I had to but study, and I kept excelling and excelling, and one fine day I decided that I want to be an actor. While I was growing up, तो मैं स्पिक मैके जाती थी, वहाँ पर एक्टिंग ट्रेनिंग करती थी, मम्मी लेके जाती थी मुझे. और उनको लगा हाँ अच्छा है, ठीक है, बच्चा सीख रहा है, को करिकुलर एक्टिविटी हो गया. तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे तो सिंगिंग भी करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि मैं एक्ट्रेस, डीवा, तो डीवा को सब कुछ आना चाहिए, सिंगिंग डांसिंग भी आनी चाहिए, एड़ा बन के पेड़ा खा लो. तो मैंने एक्टिंग के साथ साथ, मैंने थिएटर के साथ साथ वोकल्स किया, training. So I am a trained vocalist. So my mom was again very happy that wow, I've got a brilliant child, she's studying well, going to theaters and whatever, da 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 da. Little she knew that one fine day I'm going to tell her that I'm going to go to Bombay. If you don't send me to Bombay, I'll elope. One fine day, I just packed my bags. See, I'm so mental, I don't even know like how to create the drama at home. So I packed my bags, and in my room, behind the door, I kept my bag. So my mom is cleaning the room, and suddenly she's like, what bag is this? I said, no, Mama, it's just, my friend's bag. And she just opened it, it had my entire stuff. She said, what is this for? I said, I'm going to Bombay tomorrow. I didn't even know how to hide my emotion because I'm a bad liar. I can't manipulate. And that was the time my parents got alarmed, and they said, iska to dimag kharab ho gaya hai, or maybe she has a boyfriend, she wants to elope, or something is wrong with her. Being in an IS family, teacher's family, engineer's family, first of all, I am the only medicos in my house. Cut to glamorous industry where a notion has been set and decided. So it was next to impossible for me, even in the wildest dream, to come to Bombay and discover what life is about and being an actor I can be. It's not my notion, but there is a notion out there that actors are uneducated. You don't need to study to be an actor. So they would look down on certain things, because it is a very blind track, very torturous, yet tortuous path it is, because it's a blind track. You don't know what is going to happen next, and whether even if you get a film. But for me to start from home and come out of my comfort zone of education system was my biggest challenge. So I remember, this is an understatement, because while I'm revisiting, while I'm talking to you all, those days were so difficult for me that I would get up at 4 a.m. in the morning during my exam days, and I would think that
सौंदर्या, why are you doing this? You have to be an actor. मैं किसके लिए ये एग्जाम्स लिख रही हूँ? So those emotions, I don't know I can ever explain it to anyone, and or anyone has ever asked me as well, including my own parents, because nobody wants to know your journey of that emotional trauma, that why you want to be an actor, or you just want to be on screen, or you just want to be famous. And then I know that I cannot go to Bombay without my parents' financial support. How do I go? I have nobody supporting me. So what would I do? Uh, Thankfully, I became a dentist thanks to my parents today. And while I was doing my internship, uh, there was an ad in newspaper for Miss India pageant. And my friends told me to apply for it. So who do I go and talk to? I can't talk to my mom, dad. I can't talk to my sister because वो दहशत थी इतनी ज़्यादा घर में पढ़ाई की और पैशन की. So मैंने चुप चुप के I filled in the form of that Miss India organization का pageant का, and state level हो गया. Then I told my father, because एक stage पे तो पता चल ही जाएगा ना उसको ये क्या करतूतें कर रही है types, And then my father said, नहीं नहीं नहीं, हमारे घर की लड़कियां तो ये कर ही नहीं सकती हैं क्योंकि वहां पे तो बिकिनी पहनना है, वो तो इम्पॉसिबल है. I had no clue where my life would start, where would I be, what is going to happen tomorrow, who's going to come and support me, whether I'll be succeeding, whether I'll have a degree or not, whether I'll be ever recognized, come in front of the screen, on the camera. I had no clue. I had no time and patience नहीं था मेरे अंदर. I could not wait to come to Bombay, to enroll in a course, acting course. 3 साल रुकूं. So मैंने workshop join किया. And that's where I met a few casting agents from Bombay. It's a very thankless job. Because आपको कोई पूछने नहीं आता how was your day? Did you do well today? आपके कोई मन का हाल भी नहीं पूछता है उन दिनों में. सिर्फ आपको गलत ठहराया जाता है. और आप जितने लोगों से बात करने की कोशिश करते हो, सब सुन लेते हैं, फोन रख देते हैं और उसके बाद आपका मजाक उड़ाते हैं. और ये चीजें आपको बाद में पता लगती हैं. और ये वही आपके अपने लोग होते हैं. आपकी सक्सेस होने के बाद वो मोटिवेट करते हैं और वो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में अब देख पा रही हूँ. बहुत ऐसे दिन थे when I was very lonely. My father didn't speak to me for a year. Only because I came to Bombay and I could not give him results in initial year. But he's the same proud father today. When I entered Big Boss, my mother came. And when I went out, my father was outside the Big Boss house to surprise me. So I have seen that roller coaster of ups and downs in my life. कि आज मेरे पापा मेरे हर आर्टिकल की कटिंग तक संभाल के रखते हैं. और ये वो ही पापा थे जो मुझसे इतना नाराज थे क्योंकि उन्हें ही लगता था कि मेरी बेटी किसी गलत हाथ में ना लग जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए. बिकॉज इतने सारे नोशंस हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके, तो जायज सी बात है यार, कोई भी ओवर प्रोटेक्टिव होगा. वो जो चाइल्डहुड से, डेंटिस्ट्री से, फिर एक एक्टर बनने का वो जो एक जज्बा था, जुनून था, उससे बॉम्बे आने की जर्नी, और फिर वहाँ से कट टू रांची डायरीज. मुझे बहुत उम्दा एक्टर्स के साथ काम करने का आई गॉट अ चांस टू वर्क विद अनुपम सर, सतीश सर हुज नो मोर, जिमी सर. सो for a newcomer who's been really dreaming high and riding high, उसको एक ऐसी फिल्म मिलना, Slice of Life, where I was the lead, it was a big thing for me. I was always told कि you're not dating a star, you're not dating a producer, you're not dating a star kid. So what makes you think that, you'll make it here big and you being pretty and intelligent, It's not easy. 0.1% girls make it here. एंड आई थिंक शायद वो मेरा विश्वास ही था जिस चीज़ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. एंड माई जर्नी आई फील हैज़ जस्ट बिगन.
देन बिग बॉस हैपेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2-3 बार मना कर दिया और मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, बिकॉज मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही हूँ। मुझे नहीं पता कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है, और वहाँ पे पॉलिटिक्स, झगड़े, ये सब चलते हैं। अब मैं वो सब, आई एम अ मिसफिट ओवर दैट। बट वही ना कि जो लिखा है दाना पानी वो आपको मिलेगा ही, तो वो मेरी किस्मत में शायद लिखा था। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस दैट आई वेंट देयर। जो मुझे मेरे 3 शोज और मेरी मूवी नहीं दे पाई, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द सोशल मीडिया क्वीन एंड एवरीथिंग, वो मुझे बिग बॉस ने दिया। आई बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। लोग मुझे मतलब सिग्नल्स पे रोक के पिक्चर क्लिक करते हैं, एंड यू वोंट बिलीव मुझे गूज बम्स आई एम गेटिंग। 4 days back in my Delhi residence, 3 people flew down from Chandigarh to meet my mother because they saw my mother in some market in Delhi and they must have told somebody in Chandigarh. वो लोग मम्मी से मिलने आए कि आप सौंदर्य की मम्मी हो, हम आपसे मिलने आए हैं। सो वो मोमेंट मेरे लिए इतना अमेजिंग है बिकॉज मुझे मेरे से फ्लैशबैक्स आते हैं मेरी जर्नी के, कि कहाँ एक लड़की अपने घर में रह रही है, डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है, वहाँ से उसको एक्टिंग के लिए जाना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा रही है कि नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, ऐसे वैसे जो भी कुछ है, कट टू LA, कट टू दिस एंड देन बिग बॉस। सो life is a circle and on top of it my journey has just begun. So it is so amazing feeling कि मैं सिग्नल पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे रात को भी रोकते हैं, that Big Boss has given me. तो you have to be asking for it कि मुझे चाहिए। If you believe that मुझे चाहिए तो आपको मिलेगा, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, and I guarantee you for that. I'm always dreaming, so I'm a byproduct of my dreams, my hard work. मतलब जैसा मैंने कहा कि थैंकलेस होती है ये जॉब, बट आप अपने आप को वहां देख सकते हो, वो सिर्फ आप ही हो, और आप चाहते हो कि दुनिया आपको देखे वहां पे, तो फिर तो बॉस यू हैव टू वर्क हार्ड। डोंट लिव 1 day for 60 years, live those 60 years in 1 day and your life would be boom. And I think जोश टॉक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो वाकई लोगों को जोशीला बना देता है। सो आई थिंक आप भी जोशीले हो जाइए, थोड़ा कहानी जो है पिरोइए अपनी, ताकि हम भी आपको जान सकें। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।